Good afternoon, everyone. Am I audible? Hello? Please say something if I am audible. मेरी आवाज आप तक आ रही है? Yes, sir. Okay. So we shall wait for a few minutes. But screen is not so visible. It will be visible. Wait for some time. Good afternoon, sir. Good afternoon. Is my screen visible? Hello? स्क्रीन दिखाई दे रही है? आप लोग बहुत धीमे क्यों बोलते मीन्स बोलते क्यों नहीं? आप रिप्लाई क्यों करते हैं? इतना टाइम क्यों लगाते हैं रिप्लाई करने में? एक दूसरे का वेट करते हैं क्या? Okay, let us recall a few things. We were discussing about null space and range space of linear transformation. Let us recall it again. So null space means kernel of T. Okay, here we have a linear transformation from a vector space V to W. Then the kernel or the null space of T is given by all those vectors where T vanishes. This means all those vectors V in capital V such that T of V is 0. So this is called kernel of T or null space of T. Then the range space, it is nothing but the image of T and defined like this, all those vectors in W such that there is some vector V in capital V, TV equal to W. So we have already seen that these two things, kernel of T is a subspace of V and range of T is a subspace of W. Okay. Next thing that we defined was dimension of the null space of T, that is called nullity of T. Okay, and the dimension of range of T is called rank of T. Correct? So let us see some examples. Suppose we are taking vector spaces R2 and take a linear transformation from R2 to R2 which maps this vector xy to vector x plus y minus x minus y. So is this a linear transformation? Number one. Is T linear? So for that what we do, we have to see whether
this is alpha tx1 y1 plus tx2 y2 or not. So this means t of alpha x1 plus x2 alpha y1 plus y2, and you know t of this is alpha x1 plus x2 plus alpha y1 plus y2 alpha x1 plus x2 minus alpha y1 minus y2. Correct? So what you get alpha x1, okay, alpha x1 plus alpha y1 and x2 plus y2 alpha x1 minus alpha y1 x2 minus y2. So this part is alpha of tx1 y1, second part is tx2 y2. So this means t is linear. What is its kernel? What is kernel of t? Kernel of t will be all those vectors in R2 such that t of xy is 0. Okay? So let's compute this. What is t of xy? T of xy is x plus y upon x plus y and x minus y. This is 0. So this implies x plus y equal to 0 and x minus y equal to 0. If you compute this, you will get x equal to 0 and y equal to 0. Is it correct? Do you get this? Sir. How to compute kernel of t? Did you understand? Yes, sir. Okay, if so at the end what we did, we just compute this equation, okay, this system of linear equation. So it will be 2x equal to 0 implies x equal to 0 and then y equal to 0. So 0 0 is the kernel of t. Okay. So what will be nullity of t? So then what is nullity of t? What is the definition of nullity of t? It is dimension of kernel t. Dimension of kernel T. Dimension of kernel t is, in this case, dimension of kernel t is, tell me, 2. 2. Is it 2? 0. Why? Because this is 0 space, Yes. 0 subspace. What you are getting, it's 0 subspace, and you have already seen the dimension of 0 subspace is 0. Okay. So then what about rank? Now let's see what is range of t. Range of t, that is image of t. What is image of t? Can anyone tell me what will be the image of t? Okay, first see whether t is onto or not. Let's see t is onto. So how do you, what is the definition of an onto function? Onto or surjective? When do you say a function is surjective? Please answer. सर अगर
का हर एक एलिमेंट नहीं सॉरी, वो डोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के प्री इमेज हो तो ऑन2 कहेंगे। ओके, तो आपने ये कहा कि मेरे पास टी R2 टू R2, अब मेरा रेड वाला जो R2 है वो कोडोमेन है, ब्लू वाला R2 वो डोमेन है, ठीक है। तो आपके मुताबिक मैं W एक एलिमेंट लेता हूँ R2 में और जिसको मैं AB कहूँगा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ ऐसा XY मिले R2 में जो कि डोमेन का पार्ट होगा सच दैट TXY इक्वल टू AB, देन ये ऑन टू होना चाहिए, है ना। यस सर। So let's, what is TXY? This is X plus Y, X minus Y. It is AB. So this means X plus Y equal to A, X minus Y equal to B. So you already know, you have already seen a system of linear equations. Okay, this is the system of linear equation, and you know if this matrix 1 1 minus 1 this is okay, if this is invertible, then it has a unique zero. Okay, means the solution is unique. So is it the case? So what is determinant of this matrix? This is -1 -1, this is -2, correct? Have you seen this or not? ये देखा है या नहीं? यस आपने Yes, sir. हाँ ये पढ़ा हुआ ना कि अगर AX इक्वल टू बी है, अगर A इन्वर्टिबल है तो 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 जो सॉल्यूशन होगा X वो यूनिक होगा। ओके, सो दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट X एंड Y, और आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। लेट अस कंप्यूट दिस। ओके, so it will be 2x equal to a plus b. This implies x equal to a plus b by 2, and you know x equal to y plus b. Oh sorry, y equal to a minus x. So this implies a minus a plus b by 2 equal to 2a minus a minus b by 2, a minus b by 2. So you got x comma y, that is a plus b by 2 and a minus b by 2. Okay, T of a plus b by 2, a minus b by 2 is AB. So this means T is on 2. This implies T is on 2. So what would be range of T? So what will be range of T? T V where V belongs to capital V. See so we are in this case, this T is a function from R2 to R2. This is a linear transformation. This is surjective linear transformation. My question is, what is image of T or range of T? Both are same thing. What is range of T? T of V where V belongs to R2. T, what is V? V x comma y element of domain. ओके वो तो होगा, लेकिन वो एज ए सेट क्या हो, वो पूरा सेट क्या होगा? ओके, another question. Suppose you have a function f from a to b. Okay,
F is surjective. What can you say about codomain of F and range of F? What is the relation between these two? We all know range of F is always contained in B, means the codomain. But what else can you say? What else can you say if F is surjective? This is always true. F कोडोमेन टू हाँ, कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज हो जाएगा. हाँ, अगर सर्जेक्टिव है तो कोडोमेन, अगर फंक्शन सर्जेक्टिव होता है तो कोडोमेन और रेंज सेम हो जाती हैं. तो what is range of T above? So in above question, what is range of T? अभी तो आपने आंसर दिया ना, तो बताइए. Range of T is R2. R2, because R2 is the codomain. Okay. So what will be rank of T? 2. Rank of T is dimension of range of T. That is 2. Correct? Okay. Next question. Here is a question. I have given you so many exercises. Please do them, okay? So here is a question. Suppose we have a linear transformation from a vector space V to another vector space W. Okay? And we have a basis or a linearly independent set. V I equal to 1 to n is linearly independent on V. Okay? Vi is a linearly independent set. So what can you say about TV1? So TVI I1 to n, is it linearly independent? Is this linearly independent? Sir, may or may not be. May or may not be. Okay. So can you give some counter example? At least one counter Yes, example? Yes, sir. Please tell. Sir, T R3 to R2. T from Defined R3 to R2 defined as T of X, Y, Z equals to T of X, Y, Z equal to X plus Y, X plus Y, X plus 2Y plus Z. okay. So what will happen? सर यहाँ पर अगर हम बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस ले लें 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1, तो ये तो एल आई है, लेकिन अगर इसकी टी मेजर निकालते हैं तो वो एल टी निकल आता है. ओके, बहुत सही. तो क्योंकि वो 3 हो जाएंगे और आपको मालूम है इसकी डायमेंशन कितनी है? 2 है. सो R2 की डायमेंशन 2 है और कोई भी सेट जो 2 से ज्यादा वेक्टर कंटेन करेगा वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा. ठीक है? तो सर अगर यस कर दें तो दोनों की डायमेंशन अगर इक्वल ले लें तो सर एल आई टू एल आई आ जाता है. नहीं, तब भी जरूरी नहीं है. अगर सर दोनों लेकिन सेम डिफाइन नहीं, देखो T फ्रॉम V टू V ले लो. ठीक है?
Yes, sir. Okay, and TV equal to 0 for all V in V. This is the linear transformation. Correct? This is the linear map. यहाँ पर So TVI क्या होंगे? ये सब 0 होंगे. तो आपने पहले ही देखा था कि 0 तो लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता ना. यस सर. सर अगर यहाँ ठीक है. पर R2 to R2 ले लें तब इसको मतलब फाइंड करें तो R2 हो सकता है. R2 to R2 भी अगर आप डिफाइन करते हो T of xy इक्वल टू 0 0 फॉर ऑल xy. नहीं सर, यहाँ पर 0 के बजाय और कोई वेक्टर ले लें तो जैसे x. अच्छा अच्छा, 0 के अलावा कोई और क्या लेना है? ओके, T of xy इक्वल टू x, 0. ये भी एक है, ये यहाँ पर भी नहीं हो रहा, देखो. ठीक है, दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, यस सर. ठीक है. सो एक क्वेश्चन है जो आपको फिर सोचना है. सो वी हैव ऑलरेडी सीन समथिंग लाइक दिस. तो हमने क्या देखा? इफ v1 to vn be a basis of v, a basis of v, okay, and w1 w2 wn, this is an arbitrary set, of the vector space W. Then there exists a unique linear transformation T from V to W such that T of Vi equal to Wi. ये हमने इसका एक प्रूफ देखा था, याद है आपको? यस सर. अगर V बेसिस है तो ऐसा होता है. वी कैन आस्क, अगर V ये वह कंडीशन हम हटा देते हैं, V कोई भी सेट है, ये V1 V2 Vn कोई भी सेट है, be any arbitrary set. Be any arbitrary set of V, need not be basis, need not be a basis. So क्या तब भी हम कह सकते हैं? Does there exist a unique linear transformation? और first, does there exist a linear transformation? Unique की तो बात छोड़ो पहले. Does there exist a transformation? सर आई थिंक मे और मे नॉट बी. May or may not be. तो may not be जब कह रहे हैं तो आपको एक काउंटर एग्जांपल प्रोवाइड करना पड़ेगा. सर काउंटर एग्जांपल तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन सर जैसे अभी आपने जो थ्योरम बताई है, जो उसमें कहा था कि v1 v2 vn बेसिस है, तो यहाँ पर ये हमें कंफर्म नहीं है ना कि ये बेसिस है कि नहीं, या फिर अलाई है कि नहीं. अगर ये अलाई हुए तो सर तो अच्छा सोचना इस बारे में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट थिंग, तो फिर भी आप कुछ सोचेंगे तो ये पक्का आपको मिलेगा. और आप थोड़ा ऐसे सोचिए, ये मैंने कोई भी आर्बिट्ररी सेट दिया है, ठीक है, तो इसमें रिपीट करवा दीजिए. v1 v2 vn को कोई एक को रिपीट कर दीजिए, तब भी वो एक सेट होगा. पहले बात करते हैं कि ये एक v1 v2 vn, कोई भी एक vm, और इधर पर डिफरेंट w1 w2 wm, नीचे डिफरेंट है, ऊपर m+1, टोटल m+1 है. ये नीचे डिफरेंट wi लिया, ऊपर एक आपने लिया
ठीक। मान लीजिए कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो मीन्स ये V1 के करस्पॉन्डिंग W1 मिलेगा, V1 इस V1 के करस्पॉन्डिंग कुछ और मिलना चाहिए, है ना। बट ऐसा नहीं होगा, देख रहे हैं आप। हेलो, यस सर। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ होगा, तो TVI की दो डिफरेंट इमेज आ जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक हिंट है, तो इस हिंट का यूज करिए। अगर आप लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स लेते हैं, V1 to Vn से लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो ये लास्ट वाला से Vn जो है वो क्या करेगा, वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा और उनका, ठीक है। यस सर। इसका यूज करिए। अगर ऐसा होता है तो क्या क्या गड़बड़ होगा। तो पहला वाला केस तो मैंने बता दिया कि आप एक काम करिए, दो सेम वेक्टर ले लीजिए, उसमें ये आर्बिट्ररी सेट है, नीचे कुछ और लीजिए। अब हम दूसरी बार में डिस्टिंक्ट ले रहे हैं, बट डिस्टिंक्ट वाला के, ये पहला वाला केस लीनियरली, ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि जब भी कोई दो वेक्टर रिपीट करते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाते हैं, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई दो किसी सेट में दो वेक्टर रिपीट कर रहे हो, वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। यस सर। तो ये इसका इस बारे में सोचिए और फिर देखना क्या होता है। नेक्स्ट थिंग इज समथिंग वी फर्स्ट नोटिस फ्रॉम अबव एग्जाम्पल। जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा उसमें नोट करो। सो फाइनली आपके पास रैंक ऑफ टी क्या था, 2, and nullity of T was 0. So there is a very nice relation between rank, nullity and dimension of this dimension of domain of the linear transformation. So this is 2 equal to 2 plus 0. So this is what it's called Rank-Nullity Theorem. So let V and W be vector spaces, two vector spaces over same field, because we will be talking about linear transformation between these two over the same field K. Okay. Let T from V to W be a linear map or linear transformation. Now assume that V is of finite dimension. Suppose dimension of V is finite. Okay, this is finite dimensional. Then rank T plus nullity T equal to dimension of V. So we shall see a proof of this. Let's first prove this. Okay, how do we do this? Okay, if T is 0, this means T from V to W is such that TV equal to 0 for all V in V.
Correct? Then Yes. what do you know? You know kernel of T is, if T is 0, what is kernel of T? 0. नहीं, तो बताओ, अगर T 0 है means T is vanishing at each vector of V, what is kernel of T? हाँ क्या होगा? हाँ हाँ सही। आपकी आवाज कट रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप ठीक बोल रहे हैं। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन आपने शायद डोमेन बोला ना? हेलो, अगर किसी को इनकी आवाज सुनाई दी तो मुझे बताओ कर्नल ऑफ टी क्या बताया इन्होंने? इज इट वी? क्या आपने आपने अच्छा चैट में भेजा है, लेकिन मैं चैट में मुझे जानना पड़ेगा। डोमेन वेक्टर स्पेस, ओके, बहुत बढ़िया। कि जब आप भेजते हैं तो मुझे वापस जाना पड़ता है, मैं नहीं देख पाता हूँ क्योंकि ये पूरा स्क्रीन ढक लेता है। ठीक है, तो ओके, सो कर्नल टी इक्वल टू वी, करेक्ट? ये समझ में आया सबको क्यों ऐसा है? बिकॉज टी वी इक्वल टू 0 फॉर ऑल वी इन वी, so kernel T equal to V. What is nullity of T? What is nullity T? अगर दो सेम, ये इसका सब स्पेस है और ये सेम है, so this is dimension of V. From here, what is range of T? Range of T is 0. This means rank T is 0. So in this case, there is nothing to prove. Everything is there. If T is 0, we are done. Correct? So 0, which is rank of T. So when T is 0, we are done. So what we do, we assume T is non-zero. Assume T is non-zero. Okay? And how will we do this? First, we all know that this kernel of T is subspace of V, is a subspace. Is a subspace of V. And nullity of T is the dimension of kernel of T. Okay, and it is finite dimensional because V is finite dimensional. So kernel of T, being a subspace of V, has a basis. Let U1 to UK be a basis of kernel of T, that is the null or null space of T. Okay. So since this is a subspace, kernel of T is a subspace, this basis can be extended to a basis of V. So U1, U2, Un, so U2, UK can be extended as a basis of, extend this to this basis. Okay? So what you claim that this TVI I1 to N is the basis of range of T.
Okay. If you prove this, this means range of, so rank of T is n, kernel of, so nullity of T is k, and you know what is dimension of V? Dimension of V is this plus this. Do you see? Yes, sir. Okay, what is, so from this position, what we infer that dimension of V is k plus n. Okay. So right here, dimension of V is k plus n. And what we, so this is our claim. We will prove this is the basis of range of T, and proving a basis is very easy. So what you do, first prove that this is linearly independent. So how do you do that? So linearly independent means take alpha I T V I is 0. Take this linear combination, make it 0. So this will be summation T alpha I V I1 to n is 0. So this is same as T of summation I1 to n alpha I V I is 0. Okay? Correct? So this is a vector in V. Okay? And it, and T vanishes at this vector. What does this mean? What does this mean? Please recall the definition of kernel of T. So from here, what can you say? लिनियर कॉम्बिनेशन जो आपका इसमें बिलोंग करेगा, ये वाला पार्ट नल स्पेस में होगा. बहुत बढ़िया. सो अल्फा आई बी आई बिलोंग टू कर्नल ऑफ टी. ओके. लेकिन आप कर्नल ऑफ टी के बारे में आपने कुछ चीजें पहले से एज्यूम की हुई है. बोला है कि u1 u2 uk क्या एक बेसिस है, और आपके पास अब एक नया वेक्टर आया है कर्नल ऑफ टी में. तो ये जो नया वेक्टर आया है ये उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की. हाँ यस सर, ये उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए. हाँ, J12 K से बीटा J UJ. ओके. अब बीटा J UJ वाले पार्ट को दूसरी साइड ले लो तो ये क्या आ जाएगा बताइए. इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस दिस इक्वल टू 0. अब लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक बड़ा लीनियर कॉम्बिनेशन मिल गया UJ और VJ में. ठीक है. लेकिन आप पहले से जानते हैं कि U1 to UK, V1 to VN, दिस इज बेसिस ऑफ V. So since U1 to UK, V1 to Vn is the basis of V, this linear combination is 0, implies alpha I equal to 0 for all I1 to n, beta j equal to 0 for all j1 to k. So means we have proven that alpha I are 0. Means TVI is linearly independent. So this is how we prove TVI is linearly independent. And second part is TVI spans range of T, that is image of T. Okay. Second part is TVI 1 to n spans range of T. So how do you see this? Take an element, take a vector in image or range of T. So since W is a vector in T, means there exists some V in V such that TV equal to W. Okay. But you know this V belongs to V, and U1 to UK, V1 to VK is the basis of V. So this small v is a linear combination of Ui and Vj. Correct?
Yes. Now apply T. This is summation alpha I T U I plus summation beta J T V J J1 to N J I1 to K. So this UI, this is basis of kernel of T. These are vectors from kernel of T. So what is TUI then? These UIs are vectors in kernel of T. So vectors from kernel T implies TUI is 0. So this is 0. Beta J T V J. So from here what you see, this W, which is TV, can be represented as a linear combination of TVJ. So this means TVJ spans range of T. Okay. So from there, what is rank of T now? So what is rank of T? This is dimension of range of T. So what is dimension of range of T? That is number of vectors in the basis. So how many vectors are in this basis? Hello? N N vectors. And how many vectors are in the basis of kernel T? Vectors. So rank of T is N. And what is nullity of minus, T? Not minus K, K. sorry, yes, sir. Okay. So now add these two, rank of T plus nullity of T, which is K plus N. And you know what was K plus N? K plus N was dimension of V. And you are done. Okay. So we are done. So this we can say, this part we can say only if T is non-zero. If T is 0, then we cannot say this. Okay, therefore we discuss two cases. So when T is 0 and when T is non-zero. When T is 0, there is nothing to prove. We have everything clear because kernel T is whole of V and range of T is the space 0 space. Okay. Now here is an exercise for you. So before, okay, I will explain what this exercise, and I will explain the composition of two linear operators when we define composition. Okay, so you all know composition of functions. You have studied composition of function in your intermediate classes, correct? Yes. Composition of two functions, you all know what is the composition of two functions. Okay, so we will. So similarly, when we so linear transformations are nothing but these are functions. So we can talk about their compositions. So in this exercise, we will see relation. Okay, let V, W and Y be subspaces. Okay, be vector spaces
over the same field, and these are of finite dimension. Okay, let me write it as B finite dimensional vector spaces. B finite dimensional spaces. Okay, over the same field K, that we now assume that. So it is there. If we talk about a linear transformation, then vector spaces are over the same field. Therefore, I am not writing that because we know that it is there. T from V to W and S from W to Y is linear transformation. Then, so that ST from V to Y is a linear transformation. This is easy to see where ST of V is S of TV. Okay. So first show that this is a linear transformation, and this showing this a linear transformation is easy. So what you do, you take ST alpha V plus U. So this will be T alpha V plus U. This will be S alpha TU TV plus TU. So this is alpha TV plus STU, and this part is alpha STV. Okay, plus ST, and we are done. So from here you can easily get the desired thing. Okay. Yes. Okay. Wow. This part was easy. Next thing, prove that nullity of ST is less than equal to nullity of S plus nullity of T. Third thing, rank of S plus rank of T which is less than equal to minimum of these three things you have to show. So this is an exercise for you. Yes. I have given Evening तक means हाँ मैंने इसका सॉल्यूशन दे चुका हूँ मैं फिर भी ओके प्लीज रीड दैट so actually I have given you a complete solution. So okay, this is almost complete solution, but I'll assume that you will do it your own. Okay, do it your own. Then if you face some difficulty after trying many times, say 10 times, you tried 10 times and you are not getting, then you may look at the notes and get a hint from there. Okay, so exercise means it is for your, this is for your homework. Okay, so do it your own. So in most cases I give you some hint, but at first time don't look at them. Okay, when you
Try it more than 5 times, then and you are not getting, then only please look at it. Look at the hint. Okay, now I have a question for you. Question. So can we construct a linear transformation? By the way, this above theorem is called Sylvester's theorem. This exercise, this is called Sylvester's theorem, okay? Can we construct a linear transformation T from R2 to R4 such that range of T is given by a hyperplane? So this is a hyperplane. So what can you say? Sir, I study constant Answer. अगर You ऐसा are saying yes. ये एक मिनट, वो आप पहले Yes. करके देखिए, फिर कोई और से मैं पूछता हूँ, क्या कोई और बोल सकता है कि हाँ है या ना है? ओके, कोई गैस मारिए, चलिए ठीक है, मैं पूछता हूँ किसी एक से। मुस्कान, मुस्कान नहीं है। प्रिया भारती, सर मैं नहीं समझ। आपको समझ में क्या समझ में नहीं आया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सर इसमें कैसे क्या, इसमें सिर्फ सर रेंज स्पेस दिया हुआ है, तो सर कैसे क्या नहीं समझ पा रहा। हाँ, तो रेंज स्पेस दिया हुआ है, तो अब ये पूछ रहा है कि क्या हम ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं? अच्छा, अभी हमने एक थ्योरम प्रूव करी जिसका नाम था रैंक नलिटी थ्योरम। यस सर। रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है बताओ? सर रैंक नलिटी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डोमेन। डायमेंशन ऑफ डोमेन, डायमेंशन ऑफ डोमेन मीन्स यहाँ पर डायमेंशन ऑफ R2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T। अभी डायमेंशन तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है ना? यस सर। नेगेटिव होता नहीं है, या तो नॉन नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। डायमेंशन ऑफ RT कितना है? n-1। n-1 मतलब कितना? n तो आपके पास गिवन है ना? सर ये आपने कितना लिखा है? सर ये यहाँ पर जो लिखा हुआ x नहीं, ये कितना है ये? सर आपने x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 लिखा है। हाँ, x4 लिखा है, R4। सर इसकी डायमेंशन 3। तो इसकी डायमेंशन तो 3 हुई। कर्नल T की डायमेंशन कुछ भी होगी तो वो या तो 0 होगी या फिर उससे बड़ी होगी, ये हमें नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट 0 तो होगी ही। यस। ठीक है, और डायमेंशन 3 प्लस समथिंग, 3 प्लस सम n मान लेते हैं, ठीक है, वेर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और डायमेंशन ऑफ R2 कितना है? 2 है। क्या ये कभी ट्रू होगा? नो सर। तो आंसर क्या है? कंसिडर नहीं कर सकते। बिग नो। ओके, तो अभी जिन्होंने मुझे यस बोला था वो भी ये समझ पा रहे हैं क्यों नहीं होगा? ओके,
got it ना. Okay, so मुझे पास 4 मिनट बचे हैं, तो एक काम करता हूँ. Okay, so I'll stop here. So I have only 4 minutes. So what I do, I'll give you. Okay, let's discuss this thing. Suppose T from V to W is a 1-1-1-1 means injective linear transformation. Linear transformation. Okay. What can you say about kernel of T? So kernel of T जीरो, वो क्योंकि सब स्पेस है वो हमेशा जीरो को कंटेन करेगा, ये तो हम जानते ही हैं. yes जीरो इज ऑलवेज कर्नल ऑफ टी तो जीरो को कंटेन करेगा, ये तो हम जानते हैं. क्या कर्नल ऑफ टी जीरो होगा? Yes, sir. When So let's see. Let's prove this. So let's see transformation kernel is of 1, then T T is 0. Okay, let's prove this. So take V belongs to kernel of T. Okay. So this implies TV equal to 0. But you know TV equal to 0, but 0 is T of 0. So since T is 1-1, TV equal to T0, this implies V equal to 0. Hence kernel of T is 0. Okay? Yes, sir. So in next lecture, so means tomorrow's lecture, what we will discuss something called isomorphism. So T from V to W is an isomorphism if T is linear. Number one, T is linear, and second, T is bijective. Okay. So here I give you an exercise for you. So if T is linear and bijective, then it's so T from V to W, V and W, these are vector spaces. This means these are sets. Okay. Then we can talk about T inverse. Okay. So this is set theoretic inverse. The set theoretic inverse that you studied in your intermediate classes. Theoretic yes inverse. we studied that bijection guarantees for So T is bijective means T is invertible. You know this. T inverse from with W2 is linear. Okay, if T is bijective and linear, then T inverse is also linear. Prove this. Okay, so this is your homework. So I'll stop here. Any question, comment? And there. आपकी आवाज बहुत कट रही है. आप कुछ हेलो बोलिए आपकी आवाज कट रही है. बोलिए क्या कह रहे हैं. आपकी आवाज आप मुझे मैसेज कर दीजिए. आशीष
करता हूँ। मैसेज, हाँ मैसेज कर दीजिए मुझे, ठीक है। हाँ मैसेज कर दीजिए आप मुझे। ओके देन बाय।